Now solving of equation, question number 5 children is given to you. Cos of 4 x is given equal to cos 2x and they are asking you to solve this. Okay, so as we have seen, we've learned the results as if cos of theta is equal to cos of any alpha, then this result for general solution was that this theta will be equal to 2n pi plus minus of this alpha. Alpha of course has to be the minimum angle out there. Okay, but यहाँ पे क्योंकि values नहीं है, already x and thetas हैं, so we need to use alpha as whatever is out here. Okay, so for this question, if I apply this result, straight away ये form दिख रही थी मुझे, sin cos of something is equal to cos of something else. So this unknown for x will be equal to 2n pi plus minus from the formula and alpha would be the other value out here. Okay, अब अगर ये कुछ हमारा numerical value होती है, we knew it, we would leave the answer like this, और rather यहाँ 4 था तो ये 4 हटाते आप, but अभी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो unknown x ही है, x आपको evaluate करना है, तो we'll have to assemble x one side and give a solution what x is equal to. Okay, now there are two signs out here, plus minus, so this ends up giving you two solution. एक बार आप plus sign लेते हो, एक बार minus. Okay, so we will write from here 4x is equal to 2n pi, एक बार plus sign लेंगे plus of 2x, or maybe it was minus of 2x. Then this 2x if I take to the other side will become minus. So 4x minus 2x, that's 2x is equal to, here we are left with only 2n pi. Then x is equal to, because solving of equation means what x is equal to, we have to evaluate it for x. So 2 भी हटाओगे यहाँ से, you'll divide throughout by 2, so this reduces to only n pi. And यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ minus 2x इधर आएगा तो plus होके 6x हो जाएगा. Then you'll divide by 6, which will cancel out to give you x as m pi by 3. Okay, here n as well as m both are integers children. I haven't added that, kindly add that. N belongs to z, m also is some integer. ये just difference के लिए मैंने two variables use कर दिए हैं. कुछ books में आपको दोनों जगह same variable मिल सकता है, like they can give the result as one answer is n pi, another one is n pi by 3, या कुछ में अलग अलग variables भी ले लेंगे. No problem, whatever variable you take, you have to mention that that is actually an integer. Now the sixth one beta, they've given you cos 3x plus cos x and cos 2x here. ओके अभी ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे थे, सॉल्विंग जहाँ सिंप्लीफाइंग प्रूविंग वाले क्वेश्चंस थे. सो वी हैड सेड कि हमें कुछ सेम मिल जाता है तो कॉमन लेना इजी हो जाता है एंड ऑल दैट. सो 3x and x, if you take 3 plus x, that becomes 4x by 2 which will become 2x. तो ये 2x आएगा तो कॉमन लेके हमारा वर्क थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है. तो वी विल अप्लाई फॉर्मूला टू द फर्स्ट टू. सो cos c प्लस cos d फॉर्मूला में दोनों cos के टर्म्स आते हैं, एक बार सम ऑफ द एंगल्स बाय 2, एक बार डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय 2. हेंस वी गेट, that's your formula if you all remember, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, c being 3x and d being x. So this is giving you 4x by 2, that is becoming 2x, and this will become 3x minus x, 2x by 2 which is x. So अभी ये cos 2x यहाँ भी है, cos 2x यहाँ भी है, आप उसे कॉमन ले सकते हो. So cos 2x taken common, you're left with 2 cos x here, and here you'll be left with 1. Okay, equated to 0. Now a into b is equal to 0. So we have that concept clear from class 10, that if product of two numbers is 0, we say we equate both the numbers individually to 0. Product of two numbers can be 0 only if one of them is at least 0. So you'll say either cos 2x would be 0 or the other factor would be 0. Okay, तो यहाँ से आपको सिंपल इक्वेशन मिल गया जिनको आपको सॉल्व करना आता है, जैसे आप ऑलरेडी कर चुके हो. सो cos 2x इज इक्वल टू 0, तो ये स्पेशल फॉर्म है. जब यहाँ 0 आता है तो वी सेड ऑल ऑड मल्टीपल्स, सो 2n plus 1 ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 हमारा सोल्यूशन बनता है. एंड उस समय हमारा x अभी यहाँ पे क्या है 2x, बट आप इसको ऐसे नहीं छोड़ोगे, ऑफ कोर्स यू विल सॉल्व इट फॉर x. सो डिवाइडिंग बाई 2 इट विल बिकम x इज इक्वल टू 2n plus 1 पाई बाई 4. ओके, ये बाई 2 एक और आ जाएगा 2 into 2. Now from the second one, if the second factor is equal to 0, तो अब यहाँ से भी आप cos एक तरफ करोगे, बाकी सब हटाओगे, 1 will go to the other side, so 1, and then this will come in denominator, dividing by 2. So cos x is equal to 1 by 2 from here. Now 1 by 2 का आपको alpha ढूंढना है, so cos pi by 3 we know is 1 by 2. So now this is in the form cos x is equal to cos y. So we can again apply our standard result, that is this x will be equal to 2n pi लिखो, m pi लिखो, plus minus of alpha which is pi by 3 here. ये हमारा alpha है, ये result है जो हमने learn करना है, learn होना चाहिए, right? Now see the next one, seventh one.
साइन 2x वॉज गिवन एंड प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, राइट. बट वी हैव हाफ एंगल फॉर्मूला. अगर हमारी फॉर्मूलाज थरली डन है, इसे देखते हैं हमें स्ट्राइक कर जाएगा. दैट वी नो साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x. तो सारे एंगल सेम हो गए. यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल था, यहाँ पे सिंगल एंगल था. एंड फर्दर ये cos x हमारा कॉमन आ जा रहा है. सो यू आर लेफ्ट विथ cos x bracket here 2 sin x left and plus 1 left here. So again you've got two factors equal to 0. So 1 by 1 cos x is equal to 0, or maybe, okay, let's take this only. If cos x is equal to 0, let's complete that. So your x will be odd multiple of pi by 2, I said. Result है वो हमारा, right? Then the second factor, if that is equal to 0, तो ये sin x देगा आपको. This will go the other side, minus 1 by 2. 1 by 2 पाई बाई 6 है, बट अभी ये हमारा अल्फा नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे हमारा माइनस साइन है. तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट. मिनिमम एंगल लिया जाता है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों में होता है, बट आप सबसे पहला एंगल लेते हो जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है. सो दैट वुड बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. सो विल थर्ड क्वाड्रेंट इज रिटन एज पाई प्लस पाई बाई 6. ओके, सो पाई प्लस पाई बाई 6 बिकम 7 पाई बाई 6. तो हमारा अल्फा हो गया 7 पाई बाई 6, और ये हमारा रिजल्ट होता है. फॉर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन y, our x is equal to m pi, n pi, जो भी वेरिएबल आप लेना चाहो, -1 to the power of n, m 7 pi by 6. Fine. Now for the 8th one, children, you had sec ratio here and tan here. Okay, but ये sec square 2x था और हमारे पास आइडेंटिटी होती है. तो रिमेंबर जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, द रिजल्ट्स दैट वी कैन अप्लाई, वो है व्हेन यू हैव साइन साइन ऑन आइदर साइड और कॉस कॉस और टैन टैन. तो आपको उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा. ओनली देन कैन यू apply your result. Those 6 results that we have learned for solving of equation, it was either sin x is equal to 0, cos x is equal to 0, or sin x is equal to sin y, cos x is equal to cos y, tan x is equal to tan y. तो सेम रेशियो नहीं है, तो वी कांट मिक्स रेशियोज, इधर साइन उधर कॉस. ओके, तो वही अभी हमने ऊपर वाले में भी किया था. एक साइन था, एक कॉस था, तो हमने साइन वाले को एक्सपैंड करके देन वी गॉट कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोसीडेड. ओके, सो सेम थिंग वी नीड टू डू हियर. यहाँ tan है, यहाँ sec है, but we know easily sec can be converted to tan ratio because we have this identity that sec square theta is 1 plus tan square theta. तो वो हमने रख लिया है. 1 and 1 happens to get cancelled. Now another thing, children, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, till 10th you all are used to that, although in 10th also I have highlighted that to you all कि you should not be cancelling like this, क्योंकि वो incomplete solution देता है आपको, right? So we will not cancel this. हाँ, you are not going to cancel कि okay एक tan 2x और एक tan 2x cancel हो गया तो tan 2x is equal to 0 आ गया. Okay, don't do that. That will give you incomplete solution because this is the right way of doing it. Get this tan 2x to this side, then ये आपका tan 2x common आएगा. तो यहाँ पे आपको 2 factors मिलते हैं, क्योंकि ये quadratic था, आपके 2 factors and 2 solutions आने चाहिए यहाँ से. Okay, degree was 2. All right, so वो अगर आप सीधे cancel करते हैं, आप बस इतना solution देते हैं हमको. All right, no, not this one. You would have got this solution. Okay, only this one solution you would get, और ये वाला you would have missed on. Okay, so you are not going to cancel like this. You are going to take it to one side, factorize, and then one by one equate. Right? Okay, so the first factor tan 2x, if you put as 0, इसमें आप रिजल्ट लगा सकते हो. as I had told you, जो sin x is equal to 0 का होता है वही tan का भी लग जाता है. That is n pi. एट ऑल होता है ना, साइन 0 0, tan 0 भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है, तो सेम रिजल्ट लगता है. सो 2x विल बी इक्वल टू n पाई. ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे tan रेशियो 0 होगी, तो x विल बी इक्वल टू, विल डिवाइड बाई 2, n पाई बाई 2. अभी सेकेंड फैक्टर को इक्वेट करो आप. सेकेंड फैक्टर आपका ये आया था, tan 2x plus 1 था. You'll take 1 to the other side now. If you equate that to 0, 1 will come to the other side. It will come as -1. Now 1 corresponds to pi by 4. फिर लेकिन माइनस साइन की वजह से you need to go to second quadrant. That is first where the ratio will become negative. So second quadrant is pi minus pi by 4. Okay, whichever way you understand. और tan pi minus pi by 4 becomes minus tan pi by 4. ऐसे करके समझो, या whichever way you want to understand. So our alpha is actually the minimum angle or the first angle जिसके लिए -1 आता है, वो है 3 pi by 4. Pi minus pi by 4. Okay, so now again you are in the state of tan x is equal to tan y. This being your x, this being your y, so that x, that is your 2x here right now, is equal to n pi plus alpha, your y is 3 pi by 4. Dividing by 2,
x will come as m pi by 2 and 3 pi by 8 हो जाएगा. Okay, so the last one goes as you have sin x plus sin 3x and sin 5x. Okay, तो इसमें थोड़ा रीअरेंजिंग करना पड़ेगा बेटा, बिकॉज अगर आप सीधे इसमें फॉर्मूला लगाते हो तो 4 का हाफ 2 कहीं पे और नहीं है, माइनस करके और x आएगा, विल नॉट हेल्प अस. ओके, सो आइदर यू नीड टू पुट first and last as I've done it here, because 5 plus 1 6 and half of 6 3, तो 3 मेरे पास था. या आप लास्ट 2 में फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज इसका अगर आप डिफरेंस बाई 2 करोगे तो x आएगा और यहाँ पे साइन x है. ओके, सो योर चॉइस, एनी हाउ इट कैन बी डन. एनीवेज आई हैव राइटेड नाउ डन इट एज आई हैव टेकन द फर्स्ट एंड द थर्ड टुगेदर and applied sin c plus sin d formula, which is 2 sin c plus d by 2. So 2 sin sum of the angles by 2, 6, half of 6x, 3x, and cos of the difference, so x minus 5x, which is minus 4x by 2, which becomes minus 2x, but it will be written as cos 2x, because remember cos minus theta becomes plus cos theta, because आप minus theta करते हो तो fourth quadrant में जाते हो, fourth quadrant में cos positive ही रहता है. So this will come as cos 2x only. All right, and then plus sin 3x. Now we observe this 3x here as well as here, which can be taken common. So sin 3x taken common, 2 cos 2x remains here, and this will become plus of 1. So 1 by 1 equate both the factors to 0. Sin 3x is equal to 0, 0 n pi hota hai. So by dividing by 3, x will come as n pi by 3. अभी इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखोगे, 1 गोज टू द अदर साइड -1 डिवाइडिंग बाई 2, सो cos 2x इज इक्वल टू -1 by 2, तो 1 by 2 का हमें पता है इज cos ऑफ पाई बाय 3. ओके, सो cos पाई बाय 3 है, देन माइनस साइन था तो आपको देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में जाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, विच विल बी पाई माइनस पाई बाय 3. सो योर अल्फा विल बिकम 2 पाई बाय 3. ओके, सो 2x इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 2 m pi प्लस माइनस अल्फा वी हैव वर्कड आउट एज 2 pi by 3, डिवाइडिंग बाई 2 थ्रू आउट, सब 2 2 कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू m pi रिमेन्स हियर प्लस माइनस पाई बाय 3 रिमेन्स हियर.